हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Now question number 7. Here we have to find the 31st term of this AP, whose 11th term is 38 and 16th term is 73. हम सपोज कर लेते हैं कि इस AP का फर्स्ट टर्म A हम मान लेते हैं and let the common difference be D. So 11th term, so I can write this at A sub 11 is equals to 38 and 16th term is equals to 73. Here we can use the nth term formula. So 11th term का मतलब हो जाता है a plus n minus 1. Here number of terms is 11. So 11 minus 1 into d is equals to 38. Implies this is a plus 10d is equals to 38. Let's term this as the first equation. Now 16th term by using the nth term formula हम लिख सकते हैं इसको a plus n minus 1. So here number of terms is 16. So 16 minus 1 into d is equals to 73. Implies this is a plus 15d is equals to 73. Now let's term this as the second equation. Now equation 1 or 2. This is a pair of linear equations in two variables a or d. हम यहाँ use करेंगे elimination method to solve this. So equation 2 minus equation 1. So here second equation is a plus 15d is equals to 73 and first equation is a plus 10d is equals to 38. इसको हम subtract करते हैं, इसका मतलब हमें इसका साइंस रिवर्स करना पड़ेगा. दिस इज पॉजिटिव और ये नेगेटिव हम कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज 5d is equals to 35. Therefore d is equals to 35 by 5. हम इसको कैंसिल कर सकते हैं 5 से. सो दिस इज 7. सो फाइंड कर लिया कि d is equals to 7. Now substituting the value of d in equation 1, we get equation 1 is a plus 10d. So 10 instead of d मैं 7 लिख दूंगी उसकी वैल्यू which is equals to now 38. Implies a plus 70 is equals to 38. Therefore a is equals to 38 minus 70 which is equals to minus 32. अब यहाँ हमने a की वैल्यू भी हमें फाइंड हो गई minus 32. So and d is also there. हमें फाइंड करना है इसका 31st टर्म. नाउ 31st टर्म बाय यूजिंग द nth टर्म फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. दिस इज a प्लस n माइनस 1. सो हियर नंबर ऑफ टर्म्स 31 माइनस 1 इंटू d विच इज इक्वल्स टू a प्लस 30t. सो a हमने फाइंड कर लिया है. a की वैल्यू हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की जगह हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं 7 विच इज इक्वल्स टू माइनस 32 एंड दिस इज प्लस 210. सो देयरफॉर 31st टर्म इज इक्वल्स टू 178. आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरोवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.